Hello everyone, let's continue with the variable length subnet masking. Okay, so here this is what variable length subnet masking. Variable length subnet masking. So this is the IP address given, right? Or we can say this is a large network and we want to divide this large network into small sub networks, right? So here IP address is given and for this one what we'll do, we'll divide this one into three sub networks, right? So here we know that how many bits are for that subnet mask, right? So or block id, for block id here number of bits are 25, ठीक है? तो 25 बिट्स किसके लिए यूज कर रखी हैं? ब्लॉक आईडी के लिए, ठीक है? तो ब्लॉक आईडी के लिए अगर 25 है तो होस्ट आईडी के लिए कितनी बिट होंगी? तो क्या करना पड़ेगा? माइनस कर देंगे, किस में से? 32 में से। 32 माइनस 25, सो 32 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा? दैट इज 7। 7 का मतलब कितने होस्ट बनेंगे? कितने होस्ट बन जाएंगे? 2 पावर 7, राइट? सो 2 पावर 7 नंबर ऑफ होस्ट विल बी देयर, right? Now this ISP having 2 power 7 number of host and want to distribute this one to 3 persons, right? Want to distribute to 3 persons और want to divide into 3 sub networks. तो यहाँ पे 2 पावर 7 को 2 पर्सनस में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पावर 1 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 2 पावर 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पोर्शन पे 2 पावर 6 और इधर भी 2 पावर 6 हो जाएगा। ये असाइन कर दिया जाएगा किसको? क्लास सॉरी, इट इज असाइन टू द पर्सन ए, राइट? पर्सन ए को असाइन कर दिया जाएगा। ओके, लेट मी से हियर इट इज ए and this one again divide into two partitions, right? So we'll divide this one into two partitions. So again divide करेंगे तो 2 पावर 6 को क्या कर दो? फिर से डिवाइड कर दो 2 पावर 1 से, तो कितना बच गया? 2 पावर 5. So 2 power 5 means 2 power 5 that is assigned to B and 2 power 5 that is also assigned to C, right? So there are 3 sub networks will be there, right? 3 sub networks बनेंगे। चलो फिर देखते हैं तीनों की रेंज क्या आएगी और फर्दर लेट्स सी। So here it is 20.30.40.10. 10 means 1 0 1 0, here it is 4 times zeros. Okay, now if we divide into two sub networks, how many bits are required? If we divide into two sub networks, just a minute, so how many bits we require? We require 1 bit, right? So one side will put a 0, another side will put 1. Okay, so 1 bit से क्या कर दिए? 2 partitions. Again we required more partition in this partition, right? तो क्या होगा उस केस में? We require 1 more bit, right? So 1 more bit means here we'll take 1 more bit, that is 0, and here we'll take that is 1. ऑलरेडी 1 था, यहाँ पे हमने एक बिट 1 और चूज कर लिया, राइट? जस्ट ए मिनट, लेट मी राइट डाउन। Here it is 1 is already there and 1 place is remaining, so here I will put 1, so here it is 1 1. Okay, so I think till this part is it fine to all? Okay, another thing, just a minute, I am doing some mistake, let's see. Just a minute, let's see again. हाँ, सो विल हैव टू टेक केयर अबाउट द ब्लॉक आईडी ऑल्सो, है ना? तो ब्लॉक आईडी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 25 बिट्स है ना, तो 25 बिट्स का मतलब 8 बिट
plus 8 bit 24 bit, one more bit, here it is 25 bits. ओके, तो यहाँ तक तो ये क्या है, ब्लॉक आईडी है, ये ब्लॉक आईडी है, राइट। अब क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग जो होस्ट पोर्शन है उसमें से एक बिट को क्या कर लिया हमने, रिजर्व कर दिया। एक बिट का मतलब दो पार्टीशंस बन गए, ये 0 और इधर क्या हो गया 1, ये 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है, फर्दर इसमें टू पार्टीशंस करने हैं, तो यहाँ पे 1 है और टू पार्टीशंस करने का मतलब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब एक बिट और यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, राइट। तो दो बिट्स को यहाँ पे यूज़ कर लिया। नाउ वी रिक्वायर टू फाइंड आउट द रेंज, ठीक है। अब रेंज फाइंड आउट करनी है, लेट्स सी, जस्ट अ मिनट। सो हाउ टू फाइंड आउट रेंज, तो रेंज फाइंड आउट करनी है तो हमें देखना पड़ेगा इससे आगे क्या है 0, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे। अब क्या चाहिए, इसके बाद कितने प्लेसेस रिमेनिंग है, एक 0 फिक्स करने के बाद 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस। सो हियर इट इज़ 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस आर देयर। सो at 6 places I will put 0, so here it is 336, 6 places 0. So what is the value for this one, here it is 0, right. Or what about the maximum number here, so here it is 0, after that 0, and here 6 places 1 2 3 4 5 6. I will put ones, all ones. Okay, now what is the value for this one, here it is 128, here it is 64, after 64 all are 1 means this value is 63. So here this is what, 63. Okay, so till this part is it fine to all? Yes, what about others? फटाफट जवाब दे दिया करो भाई, फिर कंटिन्यू करें, है ना। सो ओके फाइन, तो ये क्या है, ये रेंज आ गई किसके लिए, क्लास ए के लिए, सॉरी सब नेटवर्क ए के लिए, राइट। सो दिस इज द रेंज फॉर द सब नेटवर्क ए। व्हाट अबाउट बी, फॉर बी हियर 0 is fixed, 1 0 is fixed. So how many places are remaining, 1 2 3 4 and 5 places are remaining. Okay, so here it is 1 2 3 4 5 places are remaining. For the maximum minimum number, here what we will put, we will put zeros for the minimum number, right. Then what will be the value of this one, here it becomes 64, so 64. What about the maximum number, so maximum number here it is 1 and 0, 1 0, here it is 0, after that 5 places 3 4 5 places. At 5 places I will put ones, so here it is 1 2 3 4 and 5 times 1. Now what is the value for this one, here it is 63, sorry 64, after 64 here it is 32, after 32 all are ones means 31, so we'll add 63, yes, so we'll add 60 64 plus 31, right. So here it is 5 and 9, so 95. So value for this one is 95, and this is what the range for the सबनेट बी, राइट। सब नेटवर्क बी की ये वाली रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द रेंज फॉर सी, लेट्स सी।
So here for the minimum number we will put zeros. And what is the value for this one? So this value is 64 plus 32 means 96. And what is the maximum value here? Here it is 1 and 1. Here it is 0. For maximum I will put all 1. So here it is 1 2 3 4 and 5. 5 times 1. So this value becomes 127, because wait for this one 128, after that all are 1 means 127. So this is what the range for the this सब नेटवर्क C. ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? इज इट फाइन टू ऑल? Okay, fine. Now let's see the story for network A, subnetwork A. So here it is A. For A we can say it is 20 dot 30 dot 40 40 dot 40 dot what 40 dot 0. Here it is 0, right? And after that here it is 1 and everything is same. After that 2, everything is same, and so on. In the last it is 2 20 dot 30 dot 40 dot 63 63. Okay, so let's see what is this one. This one we can say here it is the block id. Block id for A, class A, sorry, not a class A, subnetwork A, right? It is the block ID for subnetwork A and also the block ID for network. So here it is a block ID for network also. Okay. Now next one is this is the first host. This is what a second host, and so on. This one is the DBA, direct broadcast address. Direct broadcast address for what? It is the direct broadcast address for that subnetwork A, right? DBA for A, and before this one it is 62 and everything is same, means this is the last host. Okay, so this is what the story about the A, subnetwork A. Now tell me, is it fine to all? यहाँ तक क्लियर है? ओके, क्लियर है. ओके ओके, जस्ट अ मिनट. Now let's see the next one. Next one is this one B. Okay, so let me write down here. For B we can say it is 20 dot 30 20 dot 30 dot 40 dot 64 64, right? After that 65, everything is same, then so on. Here it is 20 dot 30 dot 40 dot 20 dot 30 dot 40 dot 95. Just a minute. Hmm.
2 power 2 power 7 by repeat करना. Okay, I will repeat that one. Okay, so here it is 20 dot 30 dot 40 dot 40 dot 95, right? So here it is 95, and now this one is what, this is the DBA, not a DBA, here it is the block ID for what, for subnetwork B. This is what, this is the first host, and before this one here it is 94, so this is what the last host, and this is what a DBA, direct broadcast address for B, subnetwork B, right? And this is the whole story about B. So is it fine to all? ओके फाइन. सो सतविंदर ने पूछा है कि ये 2 पावर 7 वाली स्टोरी क्या है. सो 2 पावर 7 इनिशियली अपने पास क्या है, नंबर ऑफ होस्ट हैं, राइट. नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, 2 पावर 7. अब इनको क्या करना है, 2 पर्सन्स में डिवाइड कर देना है. 2 पर्सन्स में डिवाइड करने का मतलब, इसको 2 पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 पावर 6 यहाँ पे, 2 पावर 6 यहाँ पे बचेगा, राइट. तो ये असाइन कर दिया हमने सब नेटवर्क ए को, राइट. तो ये सब नेटवर्क ए को असाइन कर दिया. फिर जो रिमेनिंग बच गया उसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. तो ये डिवाइड करेंगे तो 2 पावर 5 आ जाएगा, वो बी सब नेटवर्क बी को दे दिया, और ये 2 पावर 5 है सब नेटवर्क सी को दे दिया, राइट. तो ये कहानी है इसकी. समझ आ गया? Okay, fine. Now let's see next one, that is about C. So C के बारे में क्या कहानी है ये देखते हैं. So here it is 20.30, just a minute, about C. So here it is 20.30.40 dot 40 dot what, 40 dot C is this one, 96. After that here it is 97, everything is same. After that 20 dot 30 dot 40 dot 127. Okay, and before this one 126, and 126. So this is what the story of सबनेट सी. सो जस्ट ए मिनट, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट वन को, फर्स्ट वन का मतलब हो गया ये ब्लॉक आईडी फॉर सबनेट सी. नेक्स्ट इज द फर्स्ट होस्ट, ये फर्स्ट होस्ट रहेगा, और उसके बाद दिस इज व्हाट द लास्ट होस्ट, ये लास्ट होस्ट है, और ये क्या हो जाएगा, DBA, direct broadcast address. This is what the direct broadcast address for subnetwork C. Also it is DBA. This is DBA for network, right. तो ये DBA भी रहेगा किसके लिए, नेटवर्क के लिए. Okay, so finally this is the story of the C. Now tell me, is it fine to all? And you can take the screenshot.
Okay, fine. Now let's see the next one. Next one is that again here 2 power 7 number of host, and we want to divide into two sub networks, right? So 2 power 6 here, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 power 6, here also 2 power 6, right? This is assigned to A, so this partition is assigned to A, and again we'll divide this one into two sub portions, right? So here this is what 2 power 5 which is given to B, and this is what 2 power 5 which is given to C, right? Now what will be the range of A, B and C? Let's see. So again we can write down this one as 20 dot 30 dot 40 dot 10. 10 means 0 0 0 0 1 0 1 0, right? And ठीक है, और here number of bits or number of bits for block id is 25, right? So ये 24 और यहाँ तक क्या हो गया 25. This portion is for block id, and remaining portion that is for host id, right? अब जो होस्ट आईडी वाला पोर्शन है उसमें क्या करेंगे, एक बिट को फिक्स करेंगे, एक बिट को फिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा टू पार्टीशंस बन जाएंगे. सो लेट मी से हियर इट इज 0 एंड हियर इट इज 1, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इस पार्टीशंस को फर्दर क्या कर दिया, दो पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया, तो एक बिट और यूज़ कर लेंगे. तो एक बिट यूज़ करने का मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 एंड 1, ठीक है. एंड हियर इट इज़ 1, and before this one there is a 0, so put 0 here, also put 0 here, also put 0, as it is put कर दिया. Now we can find out the range. So till this part is it fine to all? Now let's see the range. Okay, fine. So here how many bits are remaining, 2 bit fix करने के बाद remaining bits कितनी है 5. So here 5 places are there, 1 2 3 4 and 5. At 5 places I will put zeros for the minimum number, so put 0 and here value become 0. For the maximum number I will put 1, so here it is 0 0, here it is 0 1 2 3 4 and 5. 5 places are there, so I will put 1 at 5 places, so here it is 3 4 5. 5 places पे 1 put करेंगे, then what it becomes, the value becomes, here it is 128 64, after that 32, after that all are 1, that means 31. So here it is 0 to 31. This is what the range for the subnetwork B, right? What about A? Let's see. So after A here 6 places are there, it is 3 4 5 6, 6 places. I will put zeros for the minimum number. Then what is the value for this one, value for this one is here it is 64 64,
yes, 64, and here this is what 1, here it is 0, 1 2 3 4 5, 5 and 6, 6 places are there, we'll put all ones, राइट. तो ऑल वंस पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज़ 127. सो दिस इज़ व्हाट द रेंज फॉर द सब नेटवर्क ए. एंड व्हाट अबाउट द next one, range for this one, let's see. So till this part is it fine to all? कंफर्म करेंगे एक बार. Okay, fine. Now let's see this one. So here how many places are remaining? 5 places. 1 2 3 4 5. At 5 places I will put zeros. And what is the value for this one? So here it is after 31 it is 32. And what about next one? Okay, so next is here it is 0 1 and 0. Here 5 places, 1 2 3 4 5, 5 places. I will put all ones. It is 3 4 5, 5 times ones. Then what it become? Value is 63. So value for this one is 63. So range for this one is 32 to 63. For class C it is 32 to 63. Okay, is it fine to all? Okay, then tell me what will be the CIDR value for subnetwork A, subnetwork B and subnetwork C. What will be the CIDR value, or we can say subnet mask? What will be the subnet mask? Yes, any idea? Twenty-six, 27, 27. Okay, fine, good. So here we can see one bit is fixed. One bit fix means ये जो ब्लॉक आईडी है इसमें एक बिट क्या हो गई, इंक्रीज हो चुकी है, राइट. वन बिट फिक्स करने का मतलब यहाँ पे एक बिट क्या हो चुकी है, इसके मास्क में इंक्रीज हो चुकी है, राइट. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 26. और यहाँ पे दो बिट्स को फिक्स करना है. दो बिट्स को फिक्स करने का मतलब हो गया कि दो बिट्स क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है मास्क में. अब दो बिट्स चेंज होने का मतलब दो बिट्स और ऐड कर दी गई है इसके मास्क में. सो 25 में दो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 27. और यहाँ पे भी दो बिट फिक्स दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 27. सो दिस इज व्हाट द वैल्यूज फॉर sorry CIDR values or subnet mask for the
subnetwork A, B and C. Is it fine to all? Okay, fine. Okay, so for A we can say here it is 20.30.40.64 64. This is what the BID block ID for what? This is what the block ID for A. Next here it is 65, everything is same, and this is what the first host, and so on 20.30.40.127. This is what the DBA for A, and this is what the DBA for network also, right? And before this one it is 126, everything is same, and this is the last host. So this is for the class A. Is it fine to all? Now what about B? For B, I think it is clear to all. For B we can say 20.30.40.40.0, right? So this is the block ID. BID BID for B, and also it is BID for network. Next is 2, it is 1. 1 is the first host, everything is same, first host. 2 is the second host, and so on 20.30.40.31. This is what the DBA for B, and before this one it is 30, that is the last host. 30 is the last host, and this is the story of B. And what about C? For C, here it is 20.30.40.32. 32, this is the DBA, not a DBA, here it is block ID for C. Next 33, that is the first host, and so on 20.30.40. Last one is 63. This is what the DBA for what? DBA for C, right? This is the DBA for C, and before this one this is 62, and this is the last host. And finally this is the story about C. Now tell me, is it fine to all? Okay, so you can take a screenshot, and session is going to over, so try to reconnect.